किस तरह हम होते हैं खूबसूरत from बदसूरत. Assalamu alaikum beautifuls, how are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today. So in today's video I'm gonna tell you a very simple technique that I think most of you don't even realize that कि आपको जब आई शेड्स अप्लाई करने हैं कहाँ पर आपको सर्कुलर स्ट्रोक्स देने हैं और कहाँ पर आपको ब्लेंडिंग करनी है. मेरा लेंस किधर जा रहा है इधर जा. Everything set. So yes, it's a very simple technique और बाहर शोर हो रहा है, so let's start it. स्ट्रोक्स दो तरह के होते हैं. जब हम क्रीज में अप्लाई करते हैं तो हम इसको इस तरह सोल्व करते हैं और जहाँ पर हमें पिगमेंटेशन ज़्यादा चाहिए होती है वहाँ पर हम इसको गोल गोल घुमाते हैं और जहाँ हमें इसको ब्लेंड करना है वहाँ पर हम सीधे स्ट्रोक्स देते हैं. तो व्हेन यू वांट अ डीपर कलर तो आप वहाँ गोल गोल घुमाएंगे और जब आपको वहाँ हल्का कलर चाहिए, ब्लेंडिंग चाहिए, तो आप स्ट्रोक्स देंगे इसको यू. प्लस यू विल ऑलवेज होल्ड योर ब्रश फ्रॉम द बैक. ब्रश हमेशा पीछे से पकड़ना है जब आपने ब्लेंडिंग कर रहे होना है. जब आपने डीप अपने सर्कुलर यानी कि आपको कलर चाहिए तो फिर आपने अपना जो है वो यूं प्रेस करना है. अगर आपको डार्क पिगमेंटेशन चाहिए, अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो आपने अपना कलर यूं स्टैम्प करना है. यूं स्टैम्प करके और देन हम यहाँ से इसको ब्लेंडिंग करेंगे विद द ब्लेंडिंग ब्रश लाइक दिस. नाउ अब हमने अंदर पिगमेंट लगाना है तो हम फिंगर यूज करेंगे, बट यू कैन ऑलवेज कट क्रीज. उससे ज़रा ज़्यादा पॉप होता है, ज़्यादा नीटनेस, प्रिसिशन आती है. सो आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी प्रिसिशन और हैवी काइंड ऑफ लुक. इट्स जस्ट अ वेडिंग. सो अब हमने इस कलर को, जो ब्राउन कलर था, इसको पिगमेंट जो हमने लगाया है उसके साथ हम इसको दोबारा ब्लेंड आउट कर देंगे. Take a blending brush and then go for it. Brow bone and inner corner. Now again I'm just gonna apply a liner and some mascara. No lashes today because it's not a lash kind of wedding look, so I'll be back. Okay, I was applying the liner and I was realizing कि इतने सारे कलर, पाउडर और पिगमेंट के बाद आपका लाइनर कभी भी वो पे ऑफ नहीं देता. बट जस्ट सी द लुक कि ये कितना पिगमेंटेड है एंड आई एम बीन यूजिंग दिस एवरी डे और इसका कलर इसी तरह पिगमेंट है. तो दिस जहाँ से आप ये लाइनर बाय कर सकते हैं, दिस इज अ स्पैन SFR कलर डबल आईलाइनर स्टैम्प. तो ये इट्स अ मस्ट. इट्स अ वेरी सो हाईली इकोनॉमिकल और यू कैन से अफोर्डेबल प्रोडक्ट है. इंस्टाग्राम से मैंने बाय किया था. आई विल लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डू चेक आउट. अमेजिंग. ओके, दिस इज अ शीट मास्क दैट आई यूज इन माय प्रीवियस वीडियो. तो आई एम जस्ट गोना शेयर विद यू गाइस कि इस तरह का लगाने के बाद आई मेकअप, तो यू हैव सो मच प्रोडक्ट फॉलन ऑन योर फेस जो आपके मेकअप को ख़राब कर सकती है. सो आई हैव नो फाउंडेशन बट यू कैन जस्ट सी दिस शीट मास्क कैन बी यूज टू यूटिलाइज दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट. डोंट थ्रो इट and use to wipe off your face. Tip. मुफ्त का ज्ञान.
And voila, I'm done with my makeup, and a good blush on plus highlighter can complete the look. I'm all going for, you know, orange theme, so this Too Faced peach blush is amazing. It still smell like peaches. I love it. So yeah, this is my whole look, and this is my whole. इतनी से मतलब टेक्निक से कितना आपकी आईज में मेकअप में फर्क पड़ जाता है, और you know नीटनेस आती है. So I have learned this over the time period. So I hope you like my video. If you like, then don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel. I will see you in my next video. Until then, take very good care of yourself and the loved ones around you. And before you leave, you can check out all these videos to make you more beautiful. Yeah, and stay beautifully blessed. So thanks for watching, guys. Allah Hafiz. ये शो नहीं खत्म होगा.